Clear? Yep. Okay. So, okay. Now the next thing, I have given you the some URL for this database thing. So have you people installed the database? Yes, no. Yes, yes. What about others? Okay, so shall I consider? Yes, Okay, fine. yes. Okay. So what you people can do, just go to the search and type SQL, okay, and just open it. It will take some time, okay. Let it open. We'll just check like your installation is proper or there is no error. Okay, so it should open like this. So please let me know once it's opened. Yep. Ease this screen. Sorry. No, I have eased this screen. It's open. Okay. So for everyone it's showing the same screen. Sorry, Vaibhav. I have MySQL Workbench. I think maybe I have not installed the studio. There are two setups here. Okay, but you said you installed. Yeah, it is MySQL Workbench I see in my No, no, system. no. See, that is different. Okay, we are going to work on this as well. For that, I have already sent email, right? So just download it. Okay, just download it both the software. Okay, because we need both. Yeah, that is Uh, fine. Yeah. so what about Anisha, Pratiksha? See, if you are not speaking, how I will understand. If you did Yes, not sir. did, हाँ, what is means? आपने Uh, किया install already? नहीं sir. So then I have sent this 2 days back. Pratiksha. Today I am installing on that. So once we log in, so Prince, can you see the server name here? आपको दिख रहा है server name? It's giving my laptop name. Okay, laptop name, right? Yeah. So sometimes it will not show the server name, right? Then we will wonder like what is the server name? Basically, server name is your system name. Okay. So how to find out the system name? Go to the command prompt. Okay. Window R. Okay. CMD. Once we hit enter, command prompt will open. Type host name. Okay. Host. As soon as you type the host name, copy this. Right. Control C. Control V. And here we are doing Windows authentication. Okay. But when you will work with the organization, it can be SQL Server authentication or it might be any other authentication, right? So where you will get username and password. Okay. But here we don't have such choice. So we are using our system as a server, right? Click on the connect. Okay. After giving this, click on the connect, right? Once you click on the connect, on the left hand side, we can see it is connect. Okay. So Prince, just check like are you able to connect it or Yeah, I will connect. Able okay. to connect. Okay. Perfect. So it means it is working perfectly fine. Okay. So what others can do at least today you do it in case any error, any problems, share the error or screenshot, right? And I will guide you what is the problem. Okay. So at least coming before coming to tomorrow, do this. Okay. Both the softwares I have given you what traveling, Google traveling, download from. Alright, so this is working perfectly. Then the next thing I want to ask, do you people have desktop Outlook on your system?
desktop Outlook, not a app. Desktop Outlook. And if you are confused, like it is desktop or app, I will write. So do you have? Have app. You have, right, Prince? No, I have app. Okay, you are having app. Okay. So app will not be useful. Okay. Uh, then what about Gautam, Manisha, Pratiksha? So I have Outlook web over here. Desktop Outlook, right? Yeah, it seems to be desktop Outlook. Yeah. Okay, it seems to be. Oh, fine. What about Anisha, Pratiksha? Yes, Vaibhav sir, I do have Outlook. Okay. So you I are also have a Outlook app. okay. You are having Outlook, right? So very simple. We can do a small test. Okay, to avoid any confusion. Okay. So just open your Outlook, right? You have the Outlook, for example, app or desktop software, right? My next question is, it is configured. Do we have any ID into that Outlook? Do have. Hmm, okay. What about others? No, it doesn't have any ID. No. It's not configured here. Okay, it is not configured, right? Uh, so It seems what? to be Outlook app I have, not a desktop app. Okay, no, that's fine. Okay. So what I was asking, if you have the app or desktop, that's fine because a lot of time there will be confusion. Okay, so mm, that is fine. But on top of that, we need the ID should be configured into the Outlook. Okay, so what you people can do, right? If you have Outlook, then configure any Gmail ID. We can configure Gmail ID also. Huh? If you have any Outlook ID or something, that is perfectly fine. But if you have a Gmail ID, Yahoo ID, Rediff ID, anything, we can configure into the Outlook. Okay. So what you people can do, you can configure your ID into the Outlook. I will share a video or steps, right? So you can configure it, right? After configuring it, right? Like just do the small test, like it is working out. Okay, if it is not working, right, then there is no choice, we will not able to use the Outlook. Okay, then what you people can do, uh, we can go ahead with the Gmail. Okay, I think everyone will have Gmail, right? So why I'm asking this from the automation point of view, right? Because in organization Outlook will be used, right? So we'll see Outlook, but if you don't have, doesn't matter. Ideally all the steps are very similar. Okay, so if you don't have Outlook, configure your Gmail ID into the Outlook. But even though it is not working, what you can do, very simple, you can create a app specific password from the Gmail. For that also, I will show you the steps. Okay, I will share it. So why we have to create a app specific password? Because we have to give the Gmail credential here. Okay, when we are doing the automation, and Gmail won't allow any third party application to connect directly through the Gmail credential. Okay, for that we have to create an app specific password, right? So I will share the steps with you people. So you can create an app specific password. Then we'll be able to automate the things with the help of your Gmail. Okay, clear? Any doubt or question? Okay. So why we need this? We need this for the email automation. That is what I'm asking. Yeah. Okay. So you can just try this. So before, okay, so we was talking about this Outlook, right? So what you can do, if you have this Outlook, right, and you are thinking it is fine, so just do a small test. Okay. Use send Outlook mail message. Okay. Just use send Outlook mail message.
and give here like to whom we want to send the email. For example, I want to send the email to this ID, right? Subject test email. Okay, body the test UiPath report. Okay, just do this. Okay, and for you people, it's a single ID, so it doesn't matter. For me, I'm having multiple IDs configured in the Outlook, right? So go to the properties, right? Account. So I will give the account, like which account it has to be used. So you can see I'm using a Gmail account. Let Okay, so if you have desktop Outlook, it should work. If you don't have desktop Outlook, it will say you don't have Outlook installed on your system. It means whatever Outlook you have, it's like a app. You don't have the desktop Outlook. Very simple. Do this test, you will end. Okay, so try before coming to the tomorrow. So now we'll go to the next problem statement for the day. And this is very good problem statement. We'll be able to learn new things as well as some tricky things as well. Okay. So this is very, very good example. XC.com. Okay. So we'll go to this XC.com, right? Uh, Now we need an input file, right? Yeah. So this is our input file, right? So what we have to do? We have to this is our input file, right? From here, we are getting amount from and to, and this is a currency conversion website basically, right? So what we have to do here, right? We have to enter the amount, right? Then we have to, for example, select or enter the value from here, right? So I'm going to select this, or we can enter as well, right? This one, and click on the convert. Okay, click on the convert. After click on the convert, what will happen? We'll get this converted. Okay, so what we have to do? We have to capture this converted rate, but I don't want all the things. I just want this. Okay, rate, and we'll go here. We'll create a column converted rate, and we'll place the one. Okay, so this is the form. Clear? Once it is done, go for the next iteration, enter it, capture it. That's clear. Problem statement. Any question, doubt? Okay. So now you people try. Okay. And let me know what issues we are facing and we'll fix. Okay. So please start. I will share this file with you. Edit. Edit. ठीक. Do it. It show me this error. This indicated target is not a valid element for selection. Select item activity. Okay. So what it is saying कि the indicated target is not a valid. अभी अभी ओके करके क्लिक कीजिए. अभी अभी क्लिक कीजिए. Yes. ठीक है. See ये टू लेयर है, right? Anchor. ठीक Yes. है. ठीक है. Forget about that emergent take or कोई problem. नहीं तो अभी फिर से आप साइड में आप पॉज पे क्लिक कीजिए. क्लिक ऑन द पॉज. ऊपर है देखिए सिलेक्ट. अरे नहीं सिलेक्ट ऑप्शन के हाँ पॉज क्लिक. हाँ अब बाहर क्लिक करो यहाँ पे कहीं पे भी क्लिक जस्ट क्लिक. नहीं नॉर्मल क्लिक करो. अरे आप इतना क्यों डर रहे हो. जस्ट क्लिक ऑन पॉज और स्क्रीन पे हाँ कहीं पे भी क्लिक करो.
प्रतीक्षा, अभी पॉज पे क्लिक कीजिए ना पहले। हाँ, अभी क्लिक कीजिए यहाँ पे, कहीं पे भी क्लिक करो, कहीं पे भी क्लिक करो, जस्ट क्लिक, नहीं तो सिलेक्ट कर। आप मुझे कंट्रोल, आप कोई भी आप मुझे कंट्रोल। नहीं 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 नहीं, प्रतीक्षा, आप मुझे कंट्रोल दीजिए। इस एस्केप पे क्लिक कीजिए, क्लिक ऑन द एस्केप, एस्केप बटन पे क्लिक कीजिए। टॉप लेफ्ट में फर्स्ट बटन होगा एस्केप, किया है। ESC, हाँ, क्लिक ऑन द एस्केप, कर दो ओके। यहाँ पे जो भी करना है कर दो ओके। हाँ, और एस्केप पे क्लिक करो। हाँ ठीक है। हाँ, गो टू द ब्राउजर। हाँ ठीक है, आपने दे दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत। हाँ, तो आप बताइए मुझे, अभी आपको यहाँ पे क्लिक करना है ना, तो ये इसको हाइड कर रहा है, राइट? तो बिफोर इंडिकेटिंग दिस शुड गो अवे ना, यस। राइट? हाँ, तो आप एक तो सिलेक्ट कर दो तो ये चला जाएगा। अब ऐसे ही होते हुए हम लोग क्लिक तो नहीं कर सकते, राइट? तो यस। सिलेक्ट, फिर क्लिक, ठीक है। बट सी वेरी सिंपल, जैसे आप मैन्युअली करोगे, मान लो कि ये प्रोसेस को मैन्युअली करना, राइट? तो आप क्या करोगे, सिलेक्ट करोगे, राइट, फिर क्लिक करोगे, राइट? एट अ टाइम ये सिलेक्ट भी है, क्लिक भी है, तो नहीं होगा, राइट? तो सेम वे ऑटोमेशन का भी सेम कंसेप्ट है, कोई डिफरेंट, ठीक है। गो अहेड। और कोई इशू है, रेफरेंस? Is it okay if I share my screen? Just when I'm doing something, just wanted to make sure कि see. या श्योर। It failed at this stage, saying that not able to identify the element. So when I'm looking here, so we're looking, it looks like some values. नहीं नहीं, फॉर दिस इज फॉर व्हाट, फ्रॉम, राइट? हाँ, from सो यू आर ओके, स्क्रॉल डाउन। नहीं नहीं, मतलब इन दिस मेन में flow. टू करेंसी, ओके, टू करेंसी, ओके, स्क्रॉल डाउन, ठीक है। एक बार आप रन कीजिए, मतलब क्लोज एवरीथिंग अगर ओपन है तो। कीवर्ड पे क्लोज है ना ब्राउजर ऑलरेडी? हाँ वो क्लिक किया है वो तो। वो आई थिंक आपका प्रॉपर्टीज आप देखिए, टॉप करना होगा। यूज एप्लीकेशन ब्राउजर में जो प्रॉपर्टी ना क्लोज हाँ ओपन, हाँ उसको पहले वाले को लाइक ओपन वाला ऑलवेज रहेगा, क्लोज नेवर रहेगा इनिशियलाइजेशन में। क्लोज, ओपन ऑलवेज, यहाँ पे दोनों नेवर। अमाउंट एंटर इज एंटर, राइट? ठीक, हाँ उसके बाद फॉर्म पे वो उसको एलिमेंट नहीं है। ओके।
What did I say? A multiple similar match one could not identify the unique. हाँ ठीक, अभी आप स्टॉप कर दो. एक ही स्क्रीन ओपन है, राइट? हाँ, एक ही है। हाँ ठीक है. ये आप देखेंगे तो ये हाँ जो हाँ सिस्टम हाँ, ने ओपन किया ठीक. वही है। चाहिए से एडिट में चल रही, इसके एडिट में जा सकते हो आप, कोई दिक्कत. एडिट टारगेट, हाँ. ओके. हाँ. तो वैलिडेट. ओके, लेट इट टेक. ओके, सी इट इज नॉट टेकिंग, राइट? तो आपने ये फ्रॉम को ये किया है, मतलब एंकर किया. एंकर फ्रॉम को एंकर कर दीजिए आप, बिकॉज देयर इज नो एंकर. हाँ ठीक है. हाँ. अभी रन करें, हम्म. में भी नहीं है तो इसको भी करिए। हाँ हाँ हाँ. एडिट एडिट. ठीक है, चलेगा. कुछ भी चलेगा, कोई दिक्कत. एटी का तो वो मेरे को भी आदत डालना है। हाँ राइट राइट, फिर नहीं तो फिर क्या, वो नया लेगा नेक्स्ट टाइम. वो नया लेगा, हाँ वही कि वो अभी तो आपके साथ जब करते तो इट्स इजी टू काइंड ऑफ फॉलो थ्रू, बट व्हेन यू आर डूइंग इंडिपेंडेंटली देन वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाँ कहाँ राइट से क्या प्रॉपर्टी मिलेगा क्या मिलेगा। राइट. हाँ. नाउ इट्स गुड. हाँ. अभी. तो अभी क्या होगा? ओके. नाउ कन्वर्ट पे नहीं. नहीं चला। कर दीजिए आप stop और देखिए कि कन्वर्ट बट. नहीं नहीं, आपने शायद कुछ डिले दिया है ना. 2 सेकंड का, बट वो कन्वर्ट के बाद दिया क्योंकि वो कन्वर्ट के ओके. बाद कन्वर्ट होने में थोड़ा स्लो जा रहा था। मेरे ख्याल से तो फेल हो जाएगा। वेट देखना। ओके, हो रहा है ना वर्क. ये वहां पे तो आ रहा है। अभी चलेगा. हम्म, हाँ, इसको बंद कर दो अभी फिलहाल. I think because of वो पॉपअप का भी हम लोग देखेंगे. विल टॉक अबाउट दैट. ये तो भी लग रहा है रुक गया है। ठीक है ठीक है. तो क्या सिलेक्ट किया इसने? अमाउंट सिलेक्ट किया है बस. अमाउंट सेलेक्ट किया, हाँ। ठीक है, फिर बंद करके फिर से एक बार, क्योंकि वो पॉपअप आ गया था ना बीच में. नहीं, रन मत कीजिए, ऑलवेज डिबग में कीजिए, क्योंकि डिबग में क्या बेनिफिट होता है ना, कि जिस पॉइंट पे आएगा उस टाइम पे वो रुक जाएगा और वहां पे आपको एरर देगा, तो वो थोड़ा इजी हो जाता है ड्यूरिंग इनिशियल. तो बेसिकली कन्वर्ट पे क्लिक नहीं कर रहा है, राइट? इवन ये जेवाईडी है क्या वहाँ पे? नहीं 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 नहीं, वो गलत ले रहा है. हाँ, मैं बोला
it is taking. ये होगा। क्योंकि क्या कर रहा है कि वो जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है ना, राइट, तो हाँ ये क्या करता है ना ऑटोमेशन की, जैसे उसको कोई एलिमेंट्स मिलता है तो लाइक सडनली वो अपना स्पीड से काम करना स्टार्ट करता है बेसिकली, राइट। तो इसमें क्या हो रहा है ना कि इट इज मिसिंग, राइट। तो वो जैसे वो कोई सिलेक्ट करने के चक्कर में फास्ट में जब कर रहा है तो दूसरा ही सिलेक्ट हो रहा है, तो विल हैंडल दिस, इसको भी हम लोग हैंडल करते हैं। तो अभी आप देखो कि ये क्लिक नहीं कर रहा है, बट राइट, ये एरर कहाँ पे दिखा रहा है, आपका गेट टेक्स्ट पे दिखा रहा है। ठीक, गेट टेक्स्ट पे एरर है ना आपको, इसमें आपको कहाँ दिखाई है? अच्छा हाँ ये रहा गेट ये देखो टेक्स्ट। ना गेट टेक्स्ट, हाँ, इसलिए यस यस आई वाज सेइंग रनिंग ना डिबग मोड, तो गेट टेक्स्ट पे एरर दिखा रहा, राइट। तो एक यस। बार मुझे कंट्रोल दीजिए, ओके, या फिर ये जो क्लिक कन्वर्ट है, राइट, मान लो कि ऐसे कभी कभी नहीं चलता है ना, तो यूज दिस इनपुट मोड, आप है ना इसको हार्डवेयर। हार्डवेयर कर दो, हार्डवेयर, ओके। तो ये फोर्सफुली ट्राई करता है, तो लेट्स रन। अभी कन्वर्ट पे क्लिक किया है इसने, बट अमाउंट के चक्कर में वो डिसेबल हो गया, राइट। यस। हाँ, तो अमाउंट में भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए था, क्योंकि अभी तक तो प्रॉब्लम नहीं आया है, राइट। एक बार फिर से रन करके देखिए। नहीं, स्टूडियो में जाइए, स्टूडियो, हाँ, स्टूडियो में जाके और स्टॉप बटन पे क्लिक कर दीजिए। एवरीवन विल फेस दिस इशू, हाँ, तो प्लीज वॉच, हाँ। ओके, ठीक। पहले तो कर रहा था, अभी नहीं कर रहा है, तो आप इसको भी एक बार हार्डवेयर इवेंट सेलेक्ट कर दीजिए। टाइप इनटू को आप बोल रहे हैं? हाँ, अमाउंट वाला। हम्म, नीचे नीचे, नहीं नहीं, ओके सॉरी, वो तो क्लिक में इसको है, क्लिक पे रहेगा। इनपुट मोड है ना, इनपुट मोड ऑप्शंस देखिए आपका, ऑप्शंस के अंदर, ऑप्शंस के अंदर, ऑप्शन यस हार्डवेयर। हाँ, ठीक। अभी कर ही देता हूँ। नहीं नहीं करूँ? नहीं नहीं, देखिए जब तक जरूरत नहीं है ना, डोंट सिलेक्ट एनी अदर ऑप्शन। फिर क्या होता है ना कि बिकॉज ऑफ दैट इट विल स्टॉप वर्किंग। हाँ, इफ यू फाइंड कि नहीं हो रहा है, तो दैट्स प्रोसेस द हो रीजन जाएगा। आप देखोगे कि बाय डिफॉल्ट वो ऑप्शन सिलेक्टेड है ही नहीं। ओके, सो दैट्स द इंटेंशन। हाँ, ठीक है, चलो। करेंसी भी चेंज हो गया, फ्रॉम वाले में यूरो लिख रहा था हाँ, तो नहीं फिर नहीं नहीं, यूएसडी जगह। वो तो होगा ही, आई विल टेल यू फॉर दिस, कोई अच्छा अच्छा। हाँ, ठीक है। अभी कन्वर्ट अगेन इट्स नॉट वर्किंग ऑन दैट, कन्वर्ट पे होना चाहिए था। एक काम कीजिए, आफ्टर द टू, राइट, टू के बाद आप 1 या 2 सेकंड का डिले दे ये दीजिए। भी लगा। हाँ, क्योंकि व्हाट आई हैव सीन कि वो थोड़ा टाइम ले रहा। हाँ, डिले, बेसिकली डिले क्यों यूज करते हैं हम लोग, राइट, कि ड्यूरिंग योर ऑटोमेशन, क्योंकि व्हाट आई सेड, जैसे इसको एलिमेंट्स मिल जाएगा, राइट, इट विल स्टार्ट वर्किंग इमीडिएटली, राइट। तो अगर आप यहाँ पे डिले दोगे, राइट, लाइक 1 सेकंड 2 सेकंड का दे दीजिए, तो व्हाट इट विल डू बेसिकली,
इट विल वेट फॉर 2 मिनट्स, सॉरी 2 सेकंड स्पेसिफिक, फिर जाके आगे वाला एक्शन करे. तो दैट्स द पर्पज ऑफ डिले. अब डिले कब देना है? व्हेन इट्स रियली रिक्वायर्ड. ठीक है, अदरवाइज क्या होगा फिर? एवरी टाइम इट विल वेट फॉर दैट पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ. ओके, तो हम लोग पहले ये सॉल्व करेंगे कि फ्रॉम एंड टू में वो गलत ले रहा है, राइट? तो फर्स्ट विल सॉल्व दैट, फिर कन्वर्ट पे आते हैं. ठीक है, तो व्हाई इट इज हैपनिंग? जब ये यहाँ पे जाके ना कुछ भी मतलब टाइप करेगा, राइट, इट विल ट्राई टू टाइप यूरो था, राइट? यूरो. हम लोगों ने यूरो टाइप किया, बट ये मतलब उससे पहले ही ये क्या कर रहा है ना कि इट इज सिलेक्टिंग द यूएस, राइट? वट एवर जो भी रहेगा. तो व्हाट वी कैन डू, जब हम लोग टाइप करते हैं यहाँ पे, ओके, तो लेट इट टाइप. ओके, इसको आप टाइप करने दीजिए, राइट? सपोज अमाउंट तो ठीक है, अभी यहाँ पे जाएगा जब ये टाइप कर रहा है, राइट? उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब मैन्युअली आप देखिए, हाँ, कि अगर हम लोग कुछ टाइप कर रहे हैं यहाँ पे कि एनीथिंग लाइक यूरो, राइट, तो ये ऐसे सिलेक्ट नहीं कर लेगा अपने आप. वी हैव टू हिट एंटर बटन, तब जाके सिलेक्ट हो जाएगा प्रॉपरली, राइट? तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन गो बैक और यहाँ पे सेंड कीज हम लोग दे देंगे. ओके, तो विल नॉट गिव दिस वन, राइट, बिकॉज इट इज नॉट see, then I will tell you the example, because it will ask like indicate or something, right? So they are working on this. So sometimes what happen, अभी आप देखोगे कि कीबोर्ड शॉर्टकट आप यूज करोगे, राइट? कीबोर्ड शॉर्टकट तो नॉट नेसेसरी कि स्क्रीन पे कुछ इंडिकेटेड होना चाहिए, राइट? तो रादर देन यूजिंग दिस, यूज दिस वन. तो यहाँ पे हमें ना कोई इंडिकेट नहीं करना पड़ता है, राइट? सपोज हम लोग Hardly. Oh, तो सिलेक्ट एंटर, यहाँ पे हम लोगों ने एंटर कर दिया. सेम थिंग, राइट, हम लोग यहाँ पे भी करेंगे. वंस वी एंटर द, ये किसका है? ये, ओके सॉरी, ये मैं कॉपी करूँ? Okay. यहाँ पे आएगा, एक राइट, एंड वन मोर विल बी देयर हियर, यहाँ. ओके, एंड नाउ वी कैन, राइट? whoever, Yes. right, now we click on the convert also. ठीक, अभी यहाँ पे देख, अभी क्या होगा नेक्स्ट टाइम, राइट? लेट लेट फिर सेम वो पिछली बार जैसा वो यूआरएल चेंज हो गया तो वो आगे जाएगा ही नीचे. हाँ, वट एवर. और वन मोर थिंग, आप देखोगे यहाँ पे कि अभी नेक्स्ट टाइम कन्वर्ट बटन है ही नहीं यहाँ, हाँ. राइट? सो यू कैन सी देर इज नो कन्वर्ट बटन. तो जस्ट इमेजिन कि जैसे कि कोई पॉपअप आता है या कोई एलिमेंट है, राइट? हाँ, तो आप जो बोल रहे थे ना यूआरएल का, सेम नहीं, यहाँ गेट टेक्स्ट पे आ रहा है आपको, गेट टेक्स्ट वो, एलिमेंट. हाँ, क्योंकि उसमें जो एंकर, मतलब आप यदि प्रॉपर्टीज ओपन करेंगे एक बार. हाँ ठीक है ना, सी यूआई एलिमेंट का एरर आता है ना, तो मतलब वेरी इट्स वेरी इजी टू सॉल्व, राइट? हाँ, सॉरी. तो आप चले जाइए, एडिट में चले जाइए या सिलेक्टर्स में चले जाइए. ठीक है, ये क्या कर रहा है, इट इज ट्राइंग टू सर्च फॉर दिस, राइट? बट ये तो है ही नहीं, नहीं. राइट? तो व्हाट वी कैन डू, हम लोग यहाँ पे स्टार कर सकते हैं. ठीक है, तो वी कैन गो एंड पुट द स्टार. तो देखते हैं कि स्टार के बाद ये चलता है या नहीं चलता है, वी डोंट, राइट? वैलिडेट, वैलिडेशन कैन नॉट बी परफॉर्म. ठीक है, इनवैलिड बोल.
ठीक, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे अभी, राइट, विल नॉट डू दिस। मैं आपको सिंपल चीज बताता हूँ, इंडिकेट करते हैं, राइट, विल इंडिकेट हियर। जब हम लोगों ने इंडिकेट किया था, राइट, एट दैट टाइम हम लोगों ने कोई एंकर ही नहीं दिया था इसे, राइट। और ये बाय डिफॉल्ट एंकर ले रहा है, तो क्या ले रहा है, उसी वैल्यू को एंकर ले रहा है, राइट। सो दैट ऑल्सो वी हैव टू मतलब देखना है प्रॉपरली, राइट। क्योंकि किसी को एंकर लेगा तो नेक्स्ट टाइम तो एंकर भी नहीं रहेगा, राइट। तो एंकर ऑल्सो स्टैटिक, एंकर डायनामिक नहीं होना चाहिए, राइट। तो हम लोग यहाँ पे बोल देंगे ना, वी कैन टेल दिस एज एंकर, राइट, अमाउंट को एंकर बोल सकते हैं। तो व्हाट आई कैन डू हियर, एंकर को आप डिलीट कर दो, आई हैव डिलीटेड एंकर, राइट, एंड सपोज आई कैन टेक अमाउंट, ठीक है, या फ्रॉम, राइट, या टू, वट एवर। बट वट इज द बेस्ट प्रैक्टिस, नियरेस्ट पोजीशन लेना है, नियरेस्ट पोजीशन। तो आप देखोगे कि बाय डिफॉल्ट नियरेस्ट पोजीशन ले रहा था, राइट। तो अकॉर्डिंगली हमें भी क्या करना है, नियरेस्ट पोजीशन ले, अदरवाइज वी कैन टेक एनीथिंग ऑन 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 दिस स्क्रीन, राइट। तो नियरेस्ट पोजीशन है अमाउंट, ओके। अभी आप देखोगे तो सिलेक्टर्स, राइट, गॉट चेंज। अभी आप इसको कंफर्म कर, ओके। नाउ लेट्स रन। सी, हम लोग इनिशियली इटसेल्फ इसको सॉल्व कर सकते थे डायरेक्टली, राइट, बट लेट द एरर कम, तभी आप लोगों को समझ में आएगा कि एरर कब आता है, कैसे आता है, राइट। एंड देन वी कैन रेक्टिफाई दोज एरर, राइट। अगर एरर ही नहीं आएगा तो कैसे रेक्टिफाई करेंगे। ठीक है, वाई इट इज टेकिंग टाइम, वो जो 2 सेकंड का डिले दिया है, तो आप वो डिले आप निकाल दीजिए, आई डोंट थिंक सो इट इज रिक्वायर्ड, ठीक है। करने के पहले आई थिंक वी हैव टू सी द बिहेवियर ऑफ द एप्लीकेशन। करेक्ट, करेक्ट। नॉर्मली क्या होता है, दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट, राइट। नॉर्मली क्या होता है ना, कि अभी ये एप्लीकेशन मिल जाएगा एंड समवन इज कमिंग टू यू कि लेट मी नो व्हाट इज द एस्टिमेशन, हाउ मच टाइम इट विल टेक, राइट। सो व्हाट वी विल थिंक, अरे ये तो क्या है कि लाइक वी हैव टू जस्ट टेक द वैल्यू फ्रॉम एक्सेल, और ये ड्रॉप डाउन में लिखना है, एंड देन वी हैव टू टाइप इनटू और क्लिक और गेट टेक्स्ट लेना, राइट। बट आप एप्लीकेशन से उसको जज नहीं कर सकते जस्ट बाय सीइंग, यू हैव टू सी द बिहेवियर, ओके। जब तक आप वो बिहेवियर नहीं देखोगे तो सिंपल चीज भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और कॉम्प्लिकेटेड चीज भी बहुत सिंपल हो जाएगा, राइट। तो दिस इज द थिंग इन द ऑटोमेशन, ओके। क्योंकि सी, सपोज लाइक यू आर अ जावा डेवलपर और डॉट नेट डेवलपर, राइट। आपको क्या एक रिक्वायरमेंट आता है कि वी हैव टू क्रिएट दिस वेबसाइट, राइट। तो ग्राउंड इज ओपन फॉर अस, राइट। तो हम लोग अपने हिसाब से उसको मोल्ड कर सकते हैं, बट हियर वी हैव टू वर्क ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन के बेसिस पे हमें मोल्ड करना है our automation, right? So why we are getting here, this is just simple thing, right? So it is taking this like get text पे भी properly ले रहा है, ठीक है। if you want to see the get text value, I think यहाँ पे it's 1.6, 1.6 है क्या, 12.90, can you see here 12.0, वेरिएबल में स्टोर किया था। okay। नहीं, इट शुड बी देयर, ठीक है, वो मैं बाद में बताऊंगा। हाँ, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू सी द स्क्रीन, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे आ गए, तो अभी इश्यूज कहाँ पे आ रहा है हमें, बिकॉज ऑफ द सिलेक्टर, राइट। तो गो टू द सिलेक्टर, राइट, इट इज नॉट वैलिड, राइट। अगर वैलिडेट नहीं कर रहा है अभी, तो वेरी सिंपल, गो हियर रिपेयर। अब देखिए रिपेयर में क्या कर देगा वो, राइट, इट विल सिलेक्टर वाज अपडेटेड टू द लाइब्रेरी। तो इसके आगे कुछ होगा ना, तो इट हैज रिमूव्ड सी, इट पुट द स्टार, राइट। नाउ इफ यू रन दिस, इट शुड वर्क परफेक्टली फाइन। इशू कहाँ पे आएगा, कन्वर्ट पे आएगा, कन्वर्ट नहीं होगा। हाँ, बिकॉज इन अ सेकंड इटरेशन कन्वर्ट बटन विल नॉट बी देयर। तो अनिशा, प्रतीक्षा, गौतम, लाइक you people also with us, right? Yes, sir, by the way. Sorry,
No, yes, Vaibhav, I'm saying हाँ yeah, हाँ हाँ we are हाँ, with you. Yeah. राइट सी इट वर्क परफेक्टली, राइट, बट अभी ये नहीं काम करेगा बिकॉज वी डोंट हैव द कन्वर्ट बटन, राइट. सो नाउ आई विल टेक माय कंट्रोल प्रिंट्स, ओके, क्योंकि नाउ इट इज वर्किंग परफेक्टली फाइन, राइट. सो आई विल शो यू इफ समथिंग इज कमिंग ऑन द स्क्रीन, मतलब हो सकता है कि वो आज है कल नहीं है, इट कैन कम एनी टाइम, राइट. तो इफ यू वांट टू वेरीफाई दैट पर्टिकुलर थिंग, ओके, so let me go back. यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है कि वी कैन क्लिक ऑन द कन्वर्ट, राइट, इट विल गेट अ कन्वर्ट बटन, बट जस्ट इमेजिन कि ये ऑप्शन ही नहीं है, देन हाउ कैन वी डील, राइट. तो वेरी सिंपल, राइट, वी कैन यूज दिस, यूज एप्लीकेशन, एंड नॉर्मली व्हाट हैपन कि अगर कोई परफॉर्म कर रहा है और हम लोग देख रहे हैं ना, तो इट विल लुक वेरी इजी, बट जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे ना, तो इट विल लुक लिटिल डिफिकल्ट. ठीक है, तो प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट. आप लोग एटलीस्ट 1 आवर दीजिए, 1 आवर, नॉट मोर देन दैट, ओके. सो सपोज एनीथिंग वी वांट टू वेरीफाई ऑन द स्क्रीन, ऐसे नहीं कि ये बटन. सपोज आपको लॉगिन के बाद वेरीफाई करना है कि आर यू रियली ऑन द होम पेज और नॉट, या कोई भी एलिमेंट को आपको वेरीफाई करना है कि इट इज प्रेजेंट और नॉट, राइट. तो वी हैव टू यूज एलिमेंट एक्सिस्ट, ओके, एलिमेंट एक्सिस्ट, ये यूज कीजिए एलिमेंट, ओके. अब जब एलिमेंट एग्जिस्ट करोगे एंड देन इंडिकेट दिस एलिमेंट, जैसे कि हम लोग कोई भी सिलेक्टर्स लेते हैं और फिर इसका एक वेरिएबल बनाइए, ओके, आउटपुट में कंट्रोल के कन्वर्ट, कन्वर्ट एग्जिस्ट, ओके. तो ये क्या करेगा ना, आपको एक बुलियन वैल्यू प्रोड्यूस करेगा. ठीक, बुलियन वैल्यू, बुलियन मतलब क्या, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरिएबल टाइप, राइट. मतलब ट्रू और फॉल्स, यस और नो में आपको आंसर देगा, राइट, एस और नो, ट्रू और फॉल्स. तो जब ये एस और नो में देगा, तो हम लोग इफ यूज कर सकते हैं ना. नाउ वी कैन यूज दिस इफ, राइट, इफ यूज कर लो आप, राइट. जैसे आप इफ यूज करोगे तो गिव हियर कन्वर्ट एग्जिस्ट, राइट, कन्वर्ट एग्जिस्ट. तो कन्वर्ट अगर एग्जिस्ट है तो व्हाट वी हैव टू डू, हमें क्लिक करना है. कहाँ पे क्लिक करना है, कन्वर्ट पे क्लिक करना है. अगर नहीं है तो व्हाट विल डू, हम लोग कुछ नहीं करेंगे, राइट, एल्स में कुछ नहीं करेंगे, राइट. और यहाँ पे हम लोग क्या दे देंगे, विल गिव दिस, ठीक है, क्लियर. और इसके बाद फिर क्या होगा, इसके बाद तो हमारा गेट टेक्स्ट रहेगा, राइट इनटू द एक्सेल वाला जो भी पार्ट रहेगा, राइट. तो दैट वी कैन डू, क्लियर. ठीक है. सो आई थिंक आई हैव सीन फॉर द प्रिंस, तो प्रिंस आप ऐड करके एक चलाइए, लेट्स सी इट्स वर्किंग. और वो वन मोर थिंग, बिफोर गोइंग अहेड, वन मोर थिंग, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. जब आप एलिमेंट एक्सिस्ट यूज करोगे, ओके, इट्स अ थंब रूल, हाँ, गो टू द टारगेट. जब आप टारगेट पे जाओगे, तो इफ यू गो हियर, व्हाट इट इज सेइंग कि अगर इसको एलिमेंट नहीं मिलता है तो इट विल वेट फॉर 30 सेकंड अननेसेसरी. तो क्या होगा, फर्स्ट टाइम इसको तो कन्वर्ट मिल जाएगा, बट नेक्स्ट टाइम इट विल नॉट गेट. तो अगर नहीं मिलेगा तो ये 30 सेकंड के लिए वेट कर, ओके, ईच एंड एवरी टाइम, करेक्ट. तो क्या होगा, आपका परफॉर्मेंस डाउनग्रेड होगा ऑटोमेशन का, कि एक ट्रांजैक्शन आइटम के लिए इट इज वेटिंग फॉर 30 सेकंड अननेसेसरी, राइट. मान लो कि 500 ट्रांजैक्शन है, तो डू द कैलकुलेशन कितने मिनट्स का आपका लॉस है, राइट. तो हियर वी हैव टू प्रोवाइड सम टाइम आउट, ओके. तो टाइम आउट वी हैव टू टेक अ जजमेंट, हाँ, कि कितने टाइम में आ रहा है नहीं आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल, राइट. तो आप देखोगे इन दिस सिनारियो कन्वर्ट इनिशियली आ जाएगा अगर आना है, नहीं आना है तो इट विल नॉट कम एट एनी पॉइंट ऑफ. तो आप नॉर्मली बस 1000 लिख दो यहाँ पे, 1000 मिली सेकेंड है, मतलब 1 सेकेंड, दैट्स इट. तो इट विल वेट फॉर 1000 milliseconds or 1 second if it is not available.
अवेलेबल है तो इट विल डू इमीडिएटली. हाँ, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द. टाइम आउट क्या है? अगर नहीं अवेलेबल है तो एप्लीकेबल. अवेलेबल है, मान लो कि 30 सेकंड का है और इसको 1 सेकंड में मिल जाता है या हाफ सेकंड में मिल जाता है तो इट विल परफॉर्म एक्शन इमीडिएटली, राइट. बट नहीं मिलता है तो इट विल वेट, मिलता है तो इट विल नॉट. क्लियर? Okay. ठीक, राइट. सो मेक श्योर यू हैव टू चेंज दैट टाइम. ठीक है, तो बाकी लोग भी ट्राई कीजिए. कुछ एरर है, इश्यू तो बताइए. आप अनिशा को. Above, can I share my screen if that's okay? हाँ, When error is coming. So, Webab, can you see my screen here? करेक्ट. So, now Webab, it may be a simple thing, but the हाँ हाँ. amount is, Okay. is Correct, not correct. been taken. So no, so what it is saying on the left hand side, right, in the red color, what is there? Type into Amount column amount doesn't. column name. Amount does not belong to the table name. Okay, Yeah, fine. So yeah. can you stop it? Huh. Okay. So go up. Go no, for each. I want to see the for each. So here you have given where currency, whatever in, right. So go to the initialization. Hmm. Hmm. Can you see the click on it? Huh. Where? This is Okay. where currency. You Yeah. have mentioned add headers also. Okay. Can you go to the variables once? Okay. Just one thing. Huh? One view control. Okay. See, this this is you are taking input. Correct? Okay. Right? And we are storing into this variable. After that, here also you are using same variable. Then how it will work, right? Because now it will try to search that amount into this particular table, right? But this is empty, right? So here you have to Okay. give different variable. No? So we have given last time like where temp, right? Temp tt. Got it, right? Okay. So now you Okay. So can. in the Yeah, tell. and in the processing, then also, for example, yeah. So that is fine. Yeah, because I'm Yes, using this correct. where Correct. currency That input. is fine. Yes. Okay. Now you Okay. can Yeah, I manage. got it. Yeah. Yeah, I got it. Thank you. You have this browser opening. I think I have made a verification which I can remove. No, but that is fine. Okay, I'll run it. But that where is that browser, right? I'm not sure you are sharing full screen or not, but I can't see the browser. Yeah, this is the browser. Yeah. No, I think you are not sharing your full screen. You are sharing only studio. Okay, I will share again. Yeah. Can you see now? Yeah.
Yes, yes. Close this. Close this. Okay. So here the select item is not working, right? Gautam, Yes. Yeah. right? So here we have to use type in. What we have to use? So, Yeah, tell me. sorry. Yeah. So I have used select item input, and then I have sent a hotkey also. So, but this is not right. Yeah. Yeah, yeah, because if you see here, like even Pratiksha also shared the screen, right? Where it was, what it was they saying, let's select item is not appropriate activity for this, right? So, Okay. right, it was saying, so we have to use a type into. So use a type into, right? Type into will work. Same for go down from to do the same thing. And while sending the hotkeys, right? Don't indicate because it might be anything, right? So don't indicate there. Just give the enter. That's it. Okay. Yeah. Just this enter. Yeah. Correct. Don't indicate. You have indicated, right? Because currently it's a Yes. Yes. USD dollar. Next time it might be euro, INR, can be anything, right? So don't indicate. You as it is. Okay. Okay. Same Yes. for I'll, two as well. Can you scroll down? Can you please scroll down? Okay, yeah, I think go down. So here you did not use the if condition, right? So we discussed like we have to use if condition. So let me yes. Yeah. share my screen. Yeah. That I have to use that. Yeah. Correct. Here we have to use the if, right? So if it is available, we'll click. If not available, we'll not click. And after that, we can use get text right into the Excel, right? Also, here we are getting this full value, right? Then we have to take only this one, right? Mm. Correct. So try this today. Everything is there into the recording. Apart from that, how to fetch only this one. Apart from that, everything is there into the recording. So try it. In case you are not able to do it, we'll do it tomorrow. No worries. Okay, because anyhow we have to see like how can we automate in a better way or not better way, alternative way we can say to this application to avoid all the hurdles. Sure. And Vaibhav, like this, I will do. I will do, and thanks for that. And then for tomorrow, it is SQL Server Management Studio that we have to install. I have already installed it now. And the second thing is the Outlook app we have Hmm, to hmm, look hmm. into. Yeah. So Okay. check it. It is app or it's a desktop. We'll come to know right after using that send Outlook mail message. Check it, right? If it is not, Okay. then we don't have any other way. We have to go with the Gmail ID. For the Gmail ID, we have to create app specific password. For that also, I will share URL and video. Right? Just do it. Right? In case you are not able to do it, or anyone basically humans, I will show you here as. Okay. So the purpose is just want to save the time on the unnecessary thing. That's it. Okay. And that is very simple step. Obviously, you everyone will be able Sure. to do it. But if not, I can show here. No worries. Yeah, that's fine, Vaibhav. Thanks a lot. Okay. But request Yeah. to everyone once again do the practice, right? Because practice is most important. Okay. And do not miss any sessions now onwards. Okay. So whatever we'll now cover will start with cloud, will start with framework, tools, everything, right? So maybe from tomorrow or day after tomorrow, right? From will start. But don't miss any sessions now, right?